Dear students, we are now to start the second year commerce, which includes in unity 1 the chapter function. Function is a Latin word and it is derived from operation, derived from the word operation. Previous I discussed regarding sets. In set I discussed what is set, what are the types of set, operation of a set, properties of set, laws of a set, and etc. etc. But now I am to start the function. Function is inputs. Basically it takes the two set. A function can be made with the help of two set, one set and a two set. So in set the elements of a set can be categorized in the curly, but in function the elements of a set can be categorized in the curly or square bracket, and it is the elements of a function can be categorized in the vertical form. एवं ये जो सेट फंक्शन विषय में डिस्कशन करबा देले कोन कहबा डिस्कशन करबा ना देखिबा ए और बी मध्य रे यदि ए हो गोटे सेट बी हो गोटे सेट एवं ए सेट मध्य कोन रिलेशन रहउछि एवं जो रिलेशन को नै कि बटरफील्ड वाज बोर्न in 1646 and died 1716 से प्रथम ए फंक्शन संबंध रे आलोचना करथिले एवं जोटा अति सिंपलीफाई कर दिथिले एवं बहुत सहज मध्य होई पारथिला ए फंक्शन। तेनो जदि आमे फंक्शन संबंध रे आमे पढापढी करबा आनि ऊपर फंडामेंटल नॉलेज आमे गेट करबा दरकार अछि। तने एवरी चैप्टर should have given a fundamental knowledge. जदि आमे हमर कांसेप्ट क्लियर करबा फंक्शन ऊपर ताले we have no doubt if any question is regarding function we can do it in successful position in which in exam we must do it. एटा सबटा बड़ कथा। तेनो आमे त फंक्शन पढा करबा फंक्शन ऊपर विशेष कर बहुत ध्यान देवा दरकार अछि एवं it is a very simple chapter and it can be simple to understand. एटा अति सहज कथा जोटा कि हम यदि प्रत्येक कथा को आमे प्रत्येक एस्पेक्ट को फंडामेंटली नॉलेज क्रिएट करबा ताला हम निश्चित भाबरे आउ वी हैव नो डाउट रिगार्डिंग फंक्शन। तेनो फंक्शन मुख्यतः बीटी सेट को नै क्रिएट करा जायछि। सपोज A is a set and B is a set. All elements of a set A and all elements of a set B, if they have some relation, the function can be existed. So what is the meaning of a function? What do you mean by function? That if someone said what is function? Now function means if A and B are the two non-empty set. Non-empty set को कौन बुझिबा? A is not a null set and B is not a null set. If A and B are the two non-empty set, each and every element of A has a unique relation with set B. Such relationship between A to B is called a one-to-one correspondence or a one-one relation. The relationship between A to B is called function. ता अर्थ कौन ना यदि A और B दुईटी अणशून्य सेट होती यदि A ର प्रत्येक उपादान B ର प्रत्येक उपादान सहित संपर्क आसीबो बा रिलेशनशिप आसीबो ताले सेही रिलेशन को आमे कहबा वन वन रिलेशन और वन टू वन करेस्पोंडेंस एवं सेही रिलेशनशिप बिटवीन A to B इज कॉल्ड फंक्शन. इट कैन बी रिटन एज f of A to B इज ए फंक्शन. जेते फंक्शन सृष्टि होबो आकु लिखि परिबो f of f such that or f of A to B is a function. A to B होज गुटे फंक्शन. जेते फंक्शन हेबो सेतोले A सेट को हमें ओटा अलगा कहिबा B सेट को मध्ये अलगा कहिबा ताले A सेट को कोन कहबा ना A सेट को कहबा डोमेन फंक्शन
बा व्हिच इज सिंबल के रिटन एज ए डोम एफ एवं बी सेट कहबा कोडोमेन फंक्शन व्हिच इज सिंबल के रिटन एज ए कोडोम एफ डोमेन फंक्शन इंक्लूड्स सपोज 1 2 3 4 एवं कोडोमेन फंक्शन इंक्लूड्स 1 4 9 16 and 25 तेणु डोमेन फंक्शन रो जो एलिमेंट्स गुड़िक नेले बा डॉम एफ जो एलिमेंट्स गुड़िक नेले जदि आम इंडिकेट करबा एक्स माध्यम सेमती कोडोमेन फंक्शन रो जो एलिमेंट्स गुड़िक नेले ताको जदि इंडिकेट करबा वाई माध्यम ताहले डॉम एफ रो एलिमेंट्स को हम वेरिएबल्स करबा एवं कोडोम एफ रो एलिमेंट्स को हम वेरिएबल कहि परबा एवं डॉम एफ सेट इंडिकेटेड 1 2 3 and 4 and codomain function or codom f indicated as 1 4 9 16 and 25 एथुरा में जान ले 1 relates to 1 2 relates to 4 3 relates to 9 and 4 relates to 16 so that तले एमान भीतर कोन आमे रिलेशन देखिबा ना 1 रो स्क्वायर 1 2 रो स्क्वायर 4 3 रो स्क्वायर 9 एवं 4 रो स्क्वायर होला 16 तेनो एथि पई एमान भीतर रिलेशन थिबारु a to b हला फंक्शन जदि रिलेशनशिप न था फंक्शन ही पे न था कि आउटी कथा होची जेतोले 1 रो स्क्वायर 2 1 1 करले 2 रो स्क्वायर 4 करले 3 रो स्क्वायर 9 करले एवं 4 रो स्क्वायर 16 करले एथुरा हम स्पष्ट जानि परछे जे 1 2 3 4 आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट सो दैट इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एवं 1 4 60 1 4 9 and 16 it depends on 1 2 3 4 so that it is called a dependent function but dependent variables तेनो डॉम एफ रो एलिमेंट्स को मध्य आमे कहि परिया को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एवं कोडोम एफ रो वेरिएबल कहि परिबा डिपेंडेंट वेरिएबल्स एवं ए सेट बा डॉम एफ रो जो एलिमेंट्स कोडोम एफ रो जो एलिमेंट्स से तो रिलेशन रखिला सच एलिमेंट्स ऑफ कोडोम एफ such as 1 4 9 and 16 will be treated as a range set or a range function सेमती किंतु आउटी कथा जाने दरकार अछि ए रो प्रत्येक एलिमेंट्स बी रो प्रत्येक एलिमेंट्स से रिलेशनशिप रखा दरकार बा रिलेशन रखा दरकार अछि किंतु कोनोसी ए सेट बा डॉम एफ रो कोनोसी एलिमेंट एलिमिनेशन होई परिबो बा सरप्लस एलिमेंट रही परिबो नाही जदि इफ एनी सरप्लस एलिमेंट एग्जिस्ट इन डॉम एफ and it has no relation with the codom f so that it is not a function जदि a रो कोनोसी सरप्लस एलिमेंट b रो कोनोसी एलिमेंट से तो रिलेशन रखिनी त से केतरे केबे फंक्शन होई परिबो नाही it may be the another case the surplus element of p for example 25 has no relation with the dom f so in such case it can be treated it will be treated as a function एवं ए जो 25 रेला ये कास रिलेशन रखिनी तथापि मध्ये आपण फंक्शन को पेगा तेणु डॉम एफ सेट रो एलिमेंट्स ला 1 2 3 4 एवं कोडम एफ रो एलिमेंट्स ला 1 4 9 16 and 25 but range set will be 1 4 9 and 16 because these elements has relation with the DOM F सेमती आउ मधु को आउ कहि परिया कोन ना DOM F रो एलिमेंट्स 1 2 3 4 is called the p-image of codom F so that the elements of codom F will be treated as the image of DOM F आकुदा हम इमति कहि परिबा तेणु फंक्शन कथा हमें डिस्कशन जोड़ा कले एथरा हम स्पष्ट जान पाले जे को क्षेत्र रे फंक्शन हे परिबोनी ना जेतोले डॉम एफ अर्थात फर्स्ट सेट रो एलिमेंट यदि कोनसी सरप्लस एलिमेंट बळी पड़ला ताले से क्षेत्र रे फंक्शन हे परिबोनी किंबा यदि डॉम एफ रो गोटे एलिमेंट टेक्स one to more relation with the codom f so in such case there will be no function तार से क्षेत्र में तो फंक्शन हे परिबोनी but in codom f
suppose 4 takes relation with the elements of x, one to more elements. So in such case it can be treated as a function. co-dom f elements dom f ro one to more elements सहित रिलेशन हो परियो, किंतु dom f रो गोटे एलिमेंट one to more एलिमेंट सहित रिलेशन हो परियो नहीं, ताले एक क्षेत्र में फंक्शन नहीं परियो नहीं. सेमती फंक्शन को मध्य फंक्शन मध्य क्लासिफाइड into two basic heads, into three basic heads such as a cost function, sales function and a profit function. এটা এই কথা পূর্বরু আমি জানিছে যে ফাংশন को तीन भाग व्यक्त करছে, but nowadays function is classified into three basic heads on the basis of set theory, on the basis of number system and on the basis of graphic representation. But on the basis of set theory it is subdivided into four basic heads such as one function, many one function, onto function and a into function. Simply on the basis of a number system, on the basis of a number system, a function can be divided into two basic heads such as algebraic functions and a non-algebraic function. So in algebraic function it can be classified into four basic heads. What are they? Now they are constant function, linear function, quadratic function and a cubic function. But non-algebraic function can be classified into three basic heads. What are they? Now they are trigonometry function, power function and a logarithm function. So I have already discussed regarding function. এই फंक्शन विषय आम भल भाव समय बुझाबुझी कले भल भी बुझे जे पढ़ापढ़ी कले ता परवर्ती जे वन फंक्शन क्या कहवा, मेनी वन फंक्शन क्या कहवा, ऑन टू फंक्शन क्या कहवा, टू फंक्शन क्या कहवा. तेणु वन फंक्शन कहले आम बुझा a function it is said to be one function if each and every elements of a DOM F has a unique relation with each and every elements of a co-DOM F. So in such case it is called one function. So what is called many one function? Now a many one function, a function it is said to be many one function if each and every elements, one or more elements of a DOM F has a relation with the unique relation of each element of a co-DOM F. So in such case it is called many one function. So जदि आमे एको लिखिबा, someone said give an example of a one function. Suppose A is a function, A is a set, B is a set. A the first set will be treated as a DOM F set. Suppose 1 2 3 4 1 4 9 and 16 and 1 has a relation with 1, 2 has a relation with 4, 3 has a relation with 9 and 4 has a relation with 16. So that it is an example of a one function. So the many one function क्या कोई करिया ना, many one function कहले suppose A is a set, B is a set. Suppose I dot indicate as a, it also I am going to dot the elements of A set and elements of B set. Suppose B set has relation with two elements of a DOM F and every element has a relation. So in such case it is called a many one function. Simply the another onto function. So the onto function is an example of a one function where there is no element but sorrow elements in co-DOM F. It is called onto function. Simply into function is also indicated as a the if any surplus elements in a co-DOM F and every element of A has a unique relation with the DOM F. By every elements of a DOM F
has a unique relation with the code of map, and there exists a surplus element in code of map. So in such case it is called an into function. So onto function and a into function, it can be treated as a one onto function, many one onto function. So the into function can be treated as a one into function, or many one into function and a many one onto function. So these are the description regarding function on the basis of a number system, on the basis of a on the basis of a set theory, on the basis of a number system. It is divided into two basic heads. One is the algebraic function, another is the non-algebraic function. Algebraic function consists four heads such as a constant function, linear function, quadratic function and a cubic function. Whereas non-algebraic functions consists trigonometric function, power function and a logarithmic function. तो एगुड़ा हूँ टोटाल फंक्शन उपर डिस्कसन कले। एत व्यतीत याकू छाड़ी सारे आउ फंक्शन अच्छी जोटा आम कहे इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, पावर फंक्शन एटसेट्रा एंड एटसेट्रा एगुड़ आउ फंक्शन उपर बेस करछि। तेणु ये जो एग्जांपल रही अलजेब्रिक कांस्टेंट फंक्शन, लिनियर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पावर फंक्शन जोड़ा अच्छी, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, logarithmic function, I will discuss the next class. So today this I will give the fundamental knowledge regarding function.